Good morning student, myself Rakhi Chauhan. I am your math teacher in grade 5. This is our second session of third chapter, How Many Squares. In previous video, we learned about the perimeter of square, perimeter of rectangle. Now we will find the area of rectangle or area of square. So here in page number 35, you have to take your textbook with you during this video. So look at these interesting stamps. So here some pictures are given as a stamp. So stamp A, stamp B, stamp C, stamp D. These both are stamped as a rectangle. While stamp E is as a square. Stamp F having a shape of rectangle. So we have to know the formula of area of rectangle. So what is the formula of rectangle is length into breadth. What is the formula of area of square? That is side into side. So here student, we have to find the area of rectangle or area of square as a stamp. Stamp A is as a rectangle. So we have to count that how many square as a rectangle. So in first stamp A, first we have to find the all areas of these all stamps. So the stamp A, you have to write down area of stamp A. So first thing is that you have to know what is the length or what is the breadth. In length, how many squares are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. You can count also 6 as a length. As a breadth 1, 2, 3. So you can say the breadth having a 3 squares, or you can say the length of the rectangle is 6 centimeter, breadth having a 3 centimeter. So you have to find length into breadth. So 6 into 3. 6 3 is 18 centimeter square. That is the area of stamp A. As usual, stamp B, area of stamp B. Same you have to count the length. तो लेंथ कौन सी होती है? जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हमारी लेंथ होती है. यहाँ पे लेंथ में 4 है और ब्रेथ में 2 है. तो यू कैन डू द डायरेक्टली मल्टीप्लाई विद द 4 into 2. 4 2 जा 8 centimeter square. This is the first method to solve the area. Or second method, because you need to early if you give the answer, so what you have to do, just count all the squares. How many squares inside the rectangle or inside the square? जितने भी squares अंदर हैं वो हमारा क्या particular area हो जाएगा. तो इस stamp C में हम क्या करेंगे? हम count करेंगे. तो how many squares are there in the stamp C? तो 6 squares are there in stamp C. So what is the area of stamp C? Directly you can say the area of stamp C is 6 centimeter square. How? You can count the squares. These all squares are 6 only. Now go for the stamp D. तो stamp D का एरिया फाइंड करने के लिए आपको काउंट ही करना है, तो आप काउंट करके लिख सकते हो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर और 12 स्क्वायर्स आर देयर इन स्टैम्प E में. You can count easily 4 centimeter square or 4 squares are there in stamp F. In stamp F also having the 12 centimeter square. So now student, you have to write down in your textbook with the pencil. Question number A. How many squares of 1 centimeter side does stamp A cover? यहाँ पे बोल रहा है कि जो स्क्वायर है स्टैम्प का, जो फर्स्ट स्क्वायर है वो 1 सेंटीमीटर कंसीडर करके how many squares are there? तो हमने काउंट भी किए और हमने एरिया भी फाइंड किया. तो हमारा हो जाता है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 18 you can write down in your A column. In stamp B, how many squares are there? We
B having a 8. Now go for the B. Which stamp has the biggest area? तो अब हमने जितने भी एरियाज फाइंड किए थे उन सब में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन सा एरिया सबसे बिगर है। तो यहाँ आप देख रहे हो 18 सेंटीमीटर, जो कि सब एरिया से कंपेयर करने के बाद में बड़ा मिलता है, बिगर एरिया है। तो वी हैव टू राइट स्टैम्प ए हैविंग अ बिगेस्ट एरिया। हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर डज दिस स्टैम्प कवर? और जो स्टैम्प ए है उसने कितने एरिया स्क्वायर कंप्लीट किए हैं या कितने स्क्वायर्स के बाद में उसने कवर किया है? तो वी हैव टू राइट 18 ओनली। हाउ मच इज द एरिया ऑफ द बिगेस्ट स्टैम्प? यू हैव टू राइट डाउन 18 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द थर्ड बॉक्स। नाउ गो फॉर द सी। विच टू स्टैम्प हैव द सेम एरिया? तो सेम एरिया कौन कौन से हैं? यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 12 स्टैम्प एफ, स्टैम्प डी ऑल्सो हैविंग 12 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का एरिया सेम है, तो आप स्टैम्प डी और स्टैम्प एफ टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो। तो स्टैम्प डी एंड स्टैम्प एफ। नाउ गो फॉर द नेक्स्ट। हाउ मच इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ दीज स्टैम्प? अब इन दोनों जो स्टैम्प का वो एरिया कितना है? वो है हमारा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो आपको डैश दिया उसमें आप क्या लिखोगे? 12 और स्क्वायर सेंटीमीटर इज रिटन ऑलरेडी। So go for the question number D. The area of the smallest stamp. Now we have to compare with the 18, 8, 6, 12, 4, 12. Compare करना तो आता ही है ना। तो सबसे smallest कौन सा है? Stamp E, जो एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वहाँ पे बॉक्स बना हुआ, वहाँ पे आपको लिखना है 4. The difference between the area of the smallest and the biggest stamp. तो अब आपको क्या फाइंड करना है? जो कंपेयर करने के बाद में बिगेस्ट एरिया कौन सा है हमारा? 18 और स्मॉलेस्ट कौन सा है? 4. So we have to do the subtraction. 14 minus 4 it means, sorry, it is biggest is 18 और smallest is 4. तो आंसर will be 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो कंपेयर करने के बाद में हमको आंसर मिलता है 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। कलेक्ट सम ओल्ड स्टैम्प, प्लेस देम ऑन द स्क्वायर ग्रिड एंड फाइंड देयर एरियाज एंड पैरामीटर। हियर वी लर्न अबाउट द हाउ टू फाइंड द पैरामीटर, how to find the area. So student, you have to collect some old stamp which is available at your home, or and then you have to make that grid like that, or you have to find the parameter also and area also. Now go for the next page, that is 30. So student, guess number A, which has the bigger area. Here you have to compare the areas which two things are given. First one is your footprint, second one is the page of this book. You are using this book, so you have to compare with your footprint or with this book. So you are knowing कि जो एरिया, जो स्पेस इसने कवर किया है, स्पेस ने कवर किया है, वो आपके फुटप्रिंट से बिगर है. Of course, this is the bigger area compared with that footprint area. So next one is which has the smaller area. जैसे अभी हमने कवर किया कि कंपेयर करने के बाद में पता चला कौन सा हमारा बिगर एरिया है, ऐसे ही अभी हमको कंपेयर करना है कि कौन सा एरिया जो स्मॉलर है. तो 2 5 rupees note, you have to keep together 5 rupees note, and second one is 100 rupees note. So you have to keep a one side 100 rupees note. तो you are saying and observe by yourself कि जो 5 rupees के दो नोट है जो उन्होंने स्पेस कवर किया, यानी कि जो एरिया है वो कवर किया है, और वो 100 rupees के नोट से एरिया से ज्यादा है. तो obviously the answer is 100 rupees note is the smaller area. Now go for the next. Look at the 10 rupees note. Have you seen 10 rupees note at your home? Just keep it with you. Is its area more than the 100 square centimeter? अब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब है जो हम ग्रिड काउंट करते हैं उस ग्रिड में 100 जो ग्रिड बने यानी कि 100 स्क्वायर्स बनेंगे वो, और उसके ऊपर आप 100 रुपीज का नोट रखना, सॉरी 10 रुपीज का नोट रखना, तो वो कंप्लीट करेगा नहीं. आंसर विल बी नो. द एरिया ऑफ 10 रुपीज नोट इज लेस देन द 100 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, सो नेक्स्ट is the area of the blue shape. Here in textbook page number 36, two pictures are given. As a blue shape,
more than the area of the yellow shape. Means first one is yellow one, second one is blue shape. So here question it says, is the area of the blue shape more than the area of the yellow shape or why? We have to find which shape is bigger. First shape is yellow, having a true triangle. Second shape is also triangle. It is also having a true triangle. So now we have to compare with this yellow shape or blue shape. Which area is bigger? Here question says, is the area of the blue shape, मतलब इसका जो एरिया है और इस एरिया से कंपेयर करने के बाद में it is bigger, but we have to compare after the measuring. Here this side I measured with the scale, you can say ruler. So I got the length of this shape is 2.8 centimeter, 2.3 centimeter, 2.8 centimeter. Now you can say this is a rectangle because opposite two sides will be equal in this side, 2.3, 2.3, 2.8, 2.8. Now it is look like a triangle also. So we have to find this side also. I got this is 3.6 centimeter. Now we have to measure both sides. Here if I go to measure it, so this side I got 2.8, which total length of this side is 5.6. Here 3.6. It is also 3.6. Here 2.3. Now we have to compare with this. Take of one triangle. You have to take this triangle. Or triangle first. You can say first to first, second to second. Let's start with the comparing. So 2.3 one side is given. Here also 2.3. So these both sides is equal. 2.8. This side also equal. Now you can compare with this 3.6 or 3.6. It means this triangle is equals to this triangle. Here you can compare with this triangle and the second one triangle, yellow shape, or second one from the blue shape. 2.3, 3.6, 3.6, or 2.8 or 2.8. It means जो yellow shape का एरिया है और blue shape का एरिया है, both are equal. तो आंसर will be no, क्योंकि उसने मोर देन यानी कि इस एरिया को, जो ब्लू शेप की एरिया को बिगर बताया, मोर देन बताया. तो ये आंसर विल बी नो. द एरिया ऑफ द ब्लू शेप इज नॉट मोर देन, मींस यू कैन से द एरिया ऑफ द ब्लू शेप इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ द येलो शेप. सो नाउ गो फॉर द क्वेश्चन नंबर ई. फ्रॉम दिस पिक्चर ओनली, इज द पैरामीटर ऑफ द येलो शेप मोर देन द पैरामीटर ऑफ द ब्लू शेप? हियर यू कैन से the both area or both parameter will be different. Means जो पैरामीटर ऑफ येलो शेप है वो उसका एरिया भी बिगर है, और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन ई वाला बोल रहा है कि इसका पैरामीटर भी बिगर है. तो यू कैन से नो. हाउ कैन यू से नो? बिकॉज बोथ एरिया इज इक्वल. और व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पैरामीटर? पैरामीटर ऑफ rectangle, I told you, when sum of all sides. अब sum of all sides what we have to
then 5.6. 6 or 6, 6. 6 beta 18, carry 1. 3, 3, 6 or 1, 7. Or 7 or 5, 12. So 12.8. So what we have to do? In area we compare with this area, which side it is given in that rectangle and the triangle. So we have compared, both are equal, but now in perimeter both are different. The perimeter of this triangle is 12.8, or this side it means rectangle having a 10.2. So you can say the blue shape is bigger than it, means the perimeter of the blue shape है वो उसका more than है. इसका आंसर भी कैसा हो जाएगा? Is the perimeter of the yellow shape, मतलब वो yellow shape को more than बता रहा है, but answer will be no. No means कि the perimeter of the blue shape is more than the yellow shape. So student, here we have learned about the area and perimeter. Today's topic also area and perimeter. We learn about the square and the triangle. So I hope you understand well the today's topic, that is area and perimeter. Thank you. Have a nice day.